Hello students, how are you all? So students, as you know, now your holidays are over, summer break is over, and today I am again with you all to start with your studies. I think I am teaching you maths, okay? So those students who have not yet joined the online classes और जिन्होंने अभी तक online classes नहीं देखी हैं, just make sure बेटा just you all of you just complete your work on time of every subject and do watch all the videos daily, okay? So that कि आप you are properly updated with your work of every subject. So students, today I am here with you all, and if you remember in our last video we have we were on chapter number 6, that is division. We have done some of the exercises also. We have already done the division facts, multiplication facts, properties of division, division with 1 digit number, 2 digit number, and division and check your solution, and word problems of division also. I think some of the word problems we have already done. So I think most of you have done, but still I am going to give you a quick recall for all the work of this chapter number 6, that is division, and after that we will continue further with our syllabus, okay? So I am just going to give you recall so that you recall all the work, all the things, all the topics that we have discussed in our chapter number 6, that is division, and after that we will study with our next topic of division. Okay class, so let's begin. So students, this is our chapter number 6, that is division. And just make sure beta, whenever you watch the video, you must open your books and notebook along with you daily. Because if you don't open your book, you will not able to understand what I am saying. Because whatever I say, sometime I read out some sentences or some questions from the book, and you will not able to find out कि मैम कहाँ से वो read कर रहे हैं. Okay, so just make sure whenever I just make a class or whenever you take a class, especially of mathematics, just make sure all of you must open your books and notebooks along with that. Okay class, so let's begin. So this is our chapter number 6, division. So the first thing that we have done in the division is properties of division. So I think you must remember what are the various properties of division that we have already done. हमने कुछ की थी ना properties of division, if you remember. How many properties of division were there? Yes, 3. There were 3 properties of division that we have done before holidays. Okay, if you know, अगर आपको याद है, that is very good, very well. But if you don't know, just try to recall it, and I am just also going to recall it along with you. Okay, so let's start. So first thing that we will do in this chapter 6, that is division, that is property of division. So first of all we will talk about properties of division. These are the first of all properties of division that we are going to study today. Okay, first of all, so just open your book beta. You are having properties of division on the page number 58 of your book. You are having properties of division on the page number 58 of your book. Okay, so I'll just read out and then I will explain you. The first property of the division is when the divisor is 1, the quotient will be same as the dividend and the quotient will be same number as the dividend. Okay, so before starting, अगर first of all आपको ये पता होना चाहिए कि dividend क्या होता है, divisor क्या होता है, remainder क्या होता है, quotient क्या होता है. Only then you will know what are the properties. Okay, so उसको start करने से पहले मैं आपको इसके components बताती हूँ division के क्या हैं. There are 4 components, that is divisor, dividend, remainder and quotient. 4. Okay, so let's read out. I'll just do a simple division. Okay, I'll just take 8 here and 2 here
Okay, so according to this question we have to divide 8 with 2. हमें 8 को किससे डिवाइड करना है? 2 से. Okay, so first of all let's divide it. 2 को टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 4s are 8. सबको 2 का टेबल आता है ना? 2 4s are 8. 2 का टेबल, if you remember, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So 8 is here ना, so 2 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया that is 8. So 2 4s are 8. ना इन दोनों को माइनस करेंगे, the answer will be 0. Okay, अभी हमें इसकी 2 की टेबल की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है. मैंने I have written it for just to make you understood how to do the division. Okay, देखिए अब हमें इसमें बताऊंगी मैं आपको कि what are the components of the division. तो first is this 2. ये जो 2 है इस समय what is this? This is a divisor. This is a divisor. 2 is a divisor. Okay, then 8. 8 क्या है? 8 is the dividend. 8 is the dividend. This 8 is the dividend. 4 क्या है? 4 is the quotient. 4 is the quotient. Okay, next 0. 0 क्या है? Remainder. This is remainder. So ये हमारे 4 components हैं division के. The first one is divisor. जो हमारा 2 है, देखिए हमें इसमें हमारा डिविडेंड 8 है. 8 को हमने 2 से डिवाइड करना है. 8 को हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से. ओके, सो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दैट इज द डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज द डिवाइजर. ओके, सो हियर द 8 इज द डिविडेंड, DIVIDENT डिविडेंड, and 2 is the divisor, DIVISOR divisor. Okay, next अब हमने जब इसको डिवाइड किया जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है दैट इज क्वोशंट. दैट इज क्वोशंट. QUOTIENT क्वोशंट. दैट इज क्वोशंट. Okay, and the last part that remains, sometimes it will be 0 or it can be any number also. So this is the remainder. Okay class, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी है. जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज द डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं दैट इज द डिविडेंड, एंड वट एवर द आंसर कम्स हियर दैट इज द क्वोशंट, एंड द लेफ्ट ओवर इज द रिमाइंडर. इट कैन बी 0 ऑल्सो और एनी नंबर ऑल्सो. ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 हो या हमेशा कोई नंबर ही होगा अदर देन 0. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, सो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स थे ऑफ डिवीजन. ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखो आपको पता लग गया कौन सा डिविडेंड है, डिवाइजर है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. अब हम प्रॉपर्टीज, देन यू कैन इजिली अंडरस्टूड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिवीजन इज, according to book, you can open your book also at page number 58. The first property is when the divisor is 1. When the divisor is 1. अच्छा, आपको ये पता है ना, ऐसे हम, this is the method of solving a division ना. When the divisor, जो ये बाहर होता है that is the divisor. When the divisor is 1, the quotient and the dividend will be same. जो हमारा dividend है, let's take 8. I'm just taking it. Okay, other than it you can take any number 4. Let's take 4. Okay, then हमारा जो डिविडेंड है एंड द क्वोशंट वो क्या होंगे? सेम. कंडीशन क्या है? इफ द डिवाइजर इज 1 देन द डिविडेंड एंड द क्वोशंट विल बी सेम. सो इज इट ट्रू? नाउ वी विल फाइंड आउट.
नॉर्मल डिवीजन करके वी विल सिंपली फाइंड आउट इज इट ट्रू कि अगर हमारा डिवाइजर है जो 1 है तो आवर क्वेश्चन एंड द डिविडेंड विल बी सेम। देखिए होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी एज वेल। सो देखिए अगर हम 1 का टेबल रीड करें, 1 के टेबल में 4 किस पे आएगा? 4 पे। 1 4 4, 1 multiplied by 4 is 4. Now 4 minus 4 is 0. So the first property was if the divisor is 1, the quotient and the dividend, the dividend and the quotient will be same. So is it true? Yes, this is very much right. देखिए हमारा यहाँ पे डिवाइजर क्या था 1 और हमने डिविडेंड क्या लिया 4। तो हमारा जब हमने इसको डिवाइड किया, when we divided it with 1, the quotient remains 4 and the dividend became 0. Okay, so that means our dividend and our quotient is same. Okay, so I think no issue in this. So this is the first property, when the divisor is 1, the dividend and the quotient will be same. Okay, this was our first property of division. Okay, now moving next to the second property. The second property of the division, according to book, it is when the divisor is the same number as the dividend. Okay, हम step by step move करेंगे. When the divisor, let's take divisor as 5. Okay, when the divisor and the is the same number as the dividend, जब हमारे divisor और dividend दोनों same number होगा, then our quotient will be 1. हमारा quotient आएगा 1. This is the second property of division. When the divisor and the dividend is same, the quotient will be 1. So this is our second property of division. Okay, so अब इसको we will not see how कि हमारी second property कैसे है, कैसे नहीं, मतलब क्या, how it come 1, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया. Okay, बेटा you have already done the division in your class 3 also and I think in 2 also. In class 2 you have done division with 1 digit number, and in class 3 you have done with 2, 3 and 4 digit number. So I hope all of you know how to do the division, but still I am going to explain you further in our further topics how to do the division. Okay, this is the simple division, that's why I am just telling you. Okay, 5, the divisor is 5 and the dividend is also 5. So according to the second property of division, when the dividend and the divisor are same, the quotient will be 1. So देखिए कैसे 5 को 5 से डिवाइड करना है, 5 को 5 से डिवाइड करना है. So 5 1s are 5. 5 के टेबल में 5 कहाँ आएगा? 1 पे. 5 multiplied by 1 is 5. 5 minus 5 is 0. So is it true? Yes. If the divisor and the dividend are same, the quotient will be 1. So this was our second property of division. Okay, ये हमारा dividend है. This is our divisor, and when we divisor and the dividend both are same, the quotient will be 1. So this is the second property of division. Okay, class. Now moving next to the third property. Third property of division. Look at the book at page number 58. Look at your book, everyone, the page number 58 of your book. When the dividend is 0 and the divisor is any number other than 0, the quotient will be 0. जो हमारा dividend is 0 and the divisor is any number. Okay, we will move according to step one more time. Okay, this is how we usually do the division. According to the third property, when the dividend is 0, so that means here the number is 0. When the dividend is 0 and divisor is any number, divisor कोई भी number होगा other than 0, मतलब जो डिवाइजर है वो हमारा 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर, एनी अदर नंबर फ्रॉम 1 to 9, एनी अदर नंबर अदर देन 0.
Suppose I'll just take 3 here. Okay, when the dividend is 0 and the divisor is any number, कोई भी number हो other than 0, मतलब यहाँ 0 ना हो, the quotient will be 0. जो हमारा quotient आएगा वो भी क्या होगा? 0. So this is our third property of division. Understood? When the dividend is 0 and the divisor is any number other than 0, the quotient will be 0. So this is our third property of division. देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो आई होप सबको 3 का टेबल आता है. नॉट फ्रॉम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 1 जार 3 3 2 जार, शुरू से फ्रॉम 0. वी विल राइट द टेबल ऑफ 3 फ्रॉम 0. 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एंड सो ऑन. ओके, अभी हमें यहां तक जरूरत है, सो आई जस्ट राइट इट. सो our dividend is 0 and the divisor is any number other than 0, the quotient will be 0. This is our third property of division. Okay, so check it out. अब 3 के टेबल में 0 को हमने 3 से डिवाइड करना है. So 3 के टेबल में 0 कहाँ आएगा? 0 पे 3 zeros are 0, so 3 zeros are 0 minus again 0. So हमारा अगर हमने 0 को 0 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 0. So is it true? Yes, it is true. Okay, so 0 divided by 3 is the quotient is 0. So this was our third property of division. Okay, I hope now all the 3 properties are clear to you all. So the first property was if the divisor is 1, अगर हमारा divisor 1 होगा, then our quotient and the dividend they will be same. Okay, and second property of division was if the dividend and the divisor are same, dividend और divisor होंगे, if they are same, then our quotient will be 1. And the third property is if the dividend is 0 and the divisor is any other number other than 0, then the quotient will be 0. Okay, so these are the 3 main properties of division that we have discussed. I hope all of you have recalled all these 3 properties of division properly, everyone. Okay, so now moving next. Next is, I'll just take a random sum from a book. Okay, I'll just take question number 5 from exercise 6.2. Okay, according to this question, okay, let's discuss about how to do the division. Division with 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, they all are same. The बस जैसे जैसे numbers increase होंगे the step will also always be increasing, but the method and the procedure for division will be same. Okay, so this is it. So the question is 18,906 divided by 4. 18,906 divided by 4. Okay, I'll just write it here so that I can write. 18,906 divided by 4. Okay, so ये अब हमें division का एक sums follow करना है. And now everybody just listen very carefully because all the methods or any numbers चाहे आपको 2 digit हो, 3 digit हो, 4 digit हो, 5 digit की division करनी हो, the method is always same. ओके, बट सिर्फ ओनली स्टेप्स हैं जो वो इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे हमारे नंबर्स इंक्रीज होते हैं. ओके, सो लेट्स डिवाइड इट. जस्ट राइट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ डिवीजन. 18,906 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो द फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग व्हेन यू डू द डिवीजन इज क्या है बेटा? हियर यू कैन सी द डिवाइजर इज 4 and the first digit or the dividend is 1.
जब हम डिवाइड करते हैं हम 1 by 1 डिजिट लेते हैं, हम सारे डिजिट्स को इकट्ठा लेके नहीं चलते, हम 1 डिजिट लेके डिवीजन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हियर द डिवाइजर इज 4 एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डिविडेंड इज 1. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज कि वेन एवर यू डू द डिविजन, द डिविडेंड शुड ऑल्सो बी ग्रेटर, शुड ऑलवेज बी greater than the divisor. The dividend should always be greater than the divisor. Okay? जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, देखिए हमारे डिवाइजर इज 4 एंड द नंबर है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड इज 1. सो द 1 इज स्मॉलर देन 4. सो क्या हम 1 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, इट कैन बी पॉसिबल. ओके, सो हम क्या करते हैं बेटा, in that case what we do, if the dividend is smaller than the divisor, we take the second digit also along with the first digit of the dividend. मतलब अब हम इस 1 लेने की बजाय 8 को भी इसके साथ ले लेंगे and that will become 18 and that will become 18 now. Okay, so now what you have to do is you have to divide 18 with 4. अब हम 1 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, अब हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो दैट लेट्स डिवाइड. ओके, 14 के टेबल को हम बेटा रीड करेंगे जहां पे 18 आता हो या 18 यहां 18 आता हो या 18 के नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, बट फर्स्ट मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट इन द डिवीजन इज दैट यू मस्ट नो हाउ द टेबल अप टू 20 ऑन योर टिप्स. सबको अप टू 20 तक सारे टेबल्स ऑन टिप्स होने चाहिए. ओनली देन यू विल बी एबल टू डू द डिवीजन प्रॉपरली. ओके, सो ऑल ऑफ यू मस्ट नो द टेबल अप टू 20. ओके, ऑन योर टिप्स. ओके, फर्स्ट ऑफ अभी मैं आपको समझाने के, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द टेबल ऑफ 4. ओके, जिनको नहीं आता है, दोज हु डोंट नो द टेबल ऑफ 4 और एनी अप टू 20, जस्ट लर्न बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिवीजन. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द टेबल ऑफ 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. Okay, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, यहाँ एक छोटा सा, 4 9s are 36 and 4 10s are 40. Okay, so this is the table of 4. ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, बट यू मस्ट ऑल नो द टेबल अप टू 20. ओके, जस्ट समझाने के लिए जिनको प्रॉब्लम है डिवीजन सॉल्व करने में. ओके, सो बेटा अब फर्स्ट सबसे मैंने इंपॉर्टेंट थिंग क्या बताई डिवीजन में, कि दैट यू ऑल मस्ट नो कि हमारा द डिविडेंड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिवाइजर. अगर हमारा डिविडेंड छोटा है तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो उसका नेक्स्ट नंबर होता है उसको भी हम अपने साथ ले लेते हैं. ओके, सो 4 के टेबल को रीड करेंगे जहां पे 18 आता हो या 18 से छोटा लेकिन नियरेस्ट नंबर, छोटा नियरेस्ट नंबर. ओके, सो 4 के टेबल में देखिए 4 1 18 आता है, नो, 4 8 12 16 एंड 20. तो 20 तो बड़ा हो गया, देन वी विल मूव टू 16. सो 4 4s are 16, 4 4s are 16 हम ले सकते हैं. सो 4 4s are 4 multiplied by 4 is 16. 18 minus 16 is 2. So here the answer is 2. Okay, हम इसमें क्या करेंगे, 18 minus 16, 18 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस. ओके, नाउ नेक्स्ट, then again our dividend is 2 and the divisor is 4. Now the divisor is bigger than the dividend. Again what will we do, we will bring down the next digit in the divisor.
सो दैट हमारा जो डिविडेंड है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा हो जाए। हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट होगा हमारे डिविडेंड में उसको हम नीचे ले आएंगे, सो दैट अवर डिविडेंड इज ग्रेटर देन अवर डिवाइजर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हमारा जो डिविडेंड है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ओनली देन यू कैन डू द डिवीजन। ओके, सो नाउ द हियर द नंबर बिकेम 29 नाउ। अब आपको क्या करना है, 4 की टेबल को रीड आउट करना है जहां पे 29 आए या 29 से स्मॉलेस्ट नियरेस्ट कोई नंबर आए। ओके, सो 4 के टेबल में 29 आता है, 20, 24, 28 and 32. So after 28 it is 32. So 32 we can't take it. So we will take 28 क्योंकि यही smallest nearest number है. So 28. 4 sevens are 28. 4 sevens are 28. 4 sevens are 28 minus. Okay. 28 minus 29. 28 को 29 से माइनस करेंगे, that will be 1 and 0 here. Okay. So now अब हमारे पास next dividend is 0. Sorry, dividend is 1 and the divisor is 4. Again the dividend is smaller than divisor. So what will we do? We will bring down the next digit in our dividend, that is 0. अब हम 0 को नीचे ले आएंगे. So now the dividend has become 10. अब हमारा dividend क्या बन गया, 10, and now it is bigger than the divisor, so we can easily solve it. Okay, 4 ones are 4, 4 twos are, sorry, अब हमने देखना है कि 4 के टेबल में 10 या 10 से छोटा नियरेस्ट, 4, 8, 12. So 12 ये बड़ा हो गया, so we will move to 8. 8 is the smallest nearest number, so 4 twos are 8 माइनस कितना आएगा, 2. ओके, 10 minus 8 is 2. Now again our dividend is smaller than our divisor, so what will we do, we will bring down the another next number in the dividend, that is 6. Now it will become 26. अब हमारा नंबर क्या बन गया, 26. Okay, and now I am having a space issue here, that's why I am going to solve it here only. But beta you are going to solve it downward only. ठीक है, मेरे पास अब यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, that will अगर मैं हो भी जाएगा messy, that will be messy and you will not able to see it properly. So that's why I am writing this number again here. 26. 26 is here ना. Now यही नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है. That means वही same repetition is there. Okay, now again we will take the table of 4 जहाँ पे 26 आता है या 26 is smallest nearest number. So now 4 के टेबल में 20, 24, 28. Now 28 is the bigger digit, bigger number. Then we will take 24. Smallest nearest number is 24. इस पे आता है 4 6 are. So 4 6 are 24. 4 6 are 24. 26 minus 24, that is 2. 2 is there. Now अब हम क्या करेंगे, now that again our dividend is smaller than our divisor. अब हमारा dividend again हमारे divisor से छोटा है, so in that case we will bring down the next digit in the dividend, but as you can see there is no more digit left in the dividend. अब हमारे डिविडेंड में कोई डिजिट बचा ही नहीं है, सो हम अब उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. सो बेटा व्हाट वी डू इन दैट केस, वी जस्ट लीव द सम हियर ओनली, बिकॉज अवर डिविडेंड इज स्मॉलर देन अवर डिवाइजर ना. अब हमारा डिविडेंड 2 है एंड द डिवाइजर इज 2, डिवाइजर इज 4. सो कैन वी सॉल्व इट? नो. सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी जस्ट लीव द सम हियर ओनली. ओके, सो नाउ this is our quotient and this is our remainder. जो ये नीचे बच जाता है आंसर, that is our remainder. In the beginning I have also told you the 4 components: dividend, divisor, quotient and the remainder. So this is the remainder and that is the quotient. Okay, I'll just, okay, one most important thing in the division. One more most important, देखिए मैंने अभी आपको डिविजन से पहले क्या बताया कि you must all know the table up to 20 on tips. Second thing,
whenever you do the division, आपको चाहे क्वेश्चन में पूछा हो राइट डाउन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, चाहे ना पूछा हो, बट यू विल राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर every time. Because what happens, sometimes it is given in the question that write down the find the quotient and remainder. So what you do, just do the division and leave the sum in the exams. And in the question it was there that find out the quotient and the remainder. So उसमें क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, आपका उसमें मार्क डिडक्ट होते हैं, बिकॉज उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया होता है व्हाट इज द क्वोशिएंट एंड व्हाट इज द रिमाइंडर. सो इन दैट केस you will always write quotient and the remainder of every sum separately. So here you will write quotient, write down the full spelling of the quotient. Quotient is 4726 and the remainder is 2. जैसा हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 2 बचा था and the quotient was 4726. So this is how you are going to find out the quotient and remainder, and you will write down the quotient and remainder in every sum. Okay, so this is enough for today beta, and tomorrow we will be I will be again with you all, and just do practice of any 5 sums of division from your book, so that you can easily recall all the division sum, and we can move further along with our syllabus. Okay class, so till then beta, just be safe and do your work neatly and properly. Okay, good day everyone.